Today we have to discuss multiplication of matrices. There is a condition for multiplication of matrices. Two matrices A and B are comfortable for multiplication if the number of columns of A matrix is equal to number of rows of B matrix. कोई भी दो मैट्रिक्स ए और बी उनको हम मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों. फॉर एग्जाम्पल we have A matrix and B matrix order of this matrix is what? 3 by 2 by 3, sorry, 2 by 3. Number of rows are 2 and number of columns are 3, and this matrix is 3 by 2, 3 rows and 2 columns. So number of columns of this matrix A matrix is equal to number of rows of this matrix. This is column and this is row. M by n. This is M by n. So now we are starting exercise 1.4. We start from question 2 because question 1 is about we have to check which matrices are comfortable for multiplication. So this question is very simple. So we start from question 2. We have to find the product. So as we can see, the number of columns of first matrix are 2 and number of rows of second matrix is 2. So these matrices are comfortable for product. For product, we have formula like first we consider general matrix like we have A, B, C, D, and another matrix today आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4. क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्किप कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट हमने ये बताना है कि कंफर्टेबल मैट्रिसेस कौन से हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए. ठीक है, हमने सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं. सो वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 में हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. प्रोडक्ट के लिए पहले हम जनरल फार्मूला डिफाइन कर देते हैं. General formula is what? R1 C1 in this matrix we have just one row and one column, so we have to multiply one row with one column in this way. 1 multiplied by 4 and 2 multiplied by 0. We got answer 4 and 0. Next part. We have matrices -3, 0, 4 and 0. So here first we check number of columns of first matrix are equal to number of rows of second matrix.
सो अगेन रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. -3 मल्टीप्लाई बाय 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 0. We got the answer -12 and 0. In question 4, we have to multiply these two matrices. First, we have to check the order of these matrices or criteria for multiplication. As we can see, the number of columns of this matrix are equals to number of rows of this matrix. So these are comfortable for multiplication. So let's start. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम. सो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1. अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1. 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई -1. 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1. Here we got 1 plus 6 minus 3. 4 plus 15 minus 6. 2 plus 8 plus 3. 8 plus 20 plus 6. Here we got 4. Here we got 19 minus 6, 13. 2 plus 8, 10 and 13. Next one is 28 and 6, 34. So this is our answer. In question 5, we have to verify commutative law under multiplication. So starting from left hand side, first we have to find product of AB. -1, 2, 3, 0. B is what? 1, -3, 2, -5. -1 multiply 1 plus 3 multiply -3. -1 multiply 2 plus 3 multiply -5. Two multiply 1 plus 0 multiply -3. 2 multiply 2 plus 0 multiply -5. -1 -9. 2 plus 0 -2 -15. 4 plus 0. -10. 2 -17. 4. We got left hand side. We freezed left hand side and now we have to find right hand side, which is equal to BA. 1 -3 2 -5. -1 2 3 0. Now we have to multiply. 1 multiply -1. So -1 plus 2 multiply 2 4. Again
1 multiply 3, 3. 2 multiply 0, 0. Minus 3 multiply minus 1, 3. Minus 5 multiply 2, minus 10. Minus 3 multiply 3, minus 9. Minus 5 multiply 0, 0. So we got the answer 3 minus 7, 3 and minus 9. So here AB not equals to BA.